Hello, everyone. I hope I am audible. Yes, hello. Yes, hi. Yes, hi. Okay, there are a couple of more people who are joining. Let's wait for 2 3 minutes, and then if they join, if they don't join, we'll continue. Okay. 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 So meanwhile, let's start. I hope everyone is in a quiet environment and with no background noise right. Yes. And can you all please turn on your camera? And if let me know if you can see me as well. Come on, just turn on your camera. It will be like, so that we should be able to interact with each other. Okay, yes, Mridul, I can see you. About the rest. Meanwhile, I'm sharing my screen. Yeah, visible a screen. I just shared it. Yes. Okay, ठीक है. So what we are gonna discuss today? Today we are gonna discuss about the introduction of AWS, the overall highlights, applications, कहाँ पे job apply कर सकते हैं, कैसे इस पे job मिलने वाली है, to what level we can study this, किस किस सर्विसेज में कहाँ जॉब मिलने वाली है, कहाँ अपने को ज़्यादा फोकस करना है, and how we should move forward with it. Okay. So, before starting, I just want to know each one of you. Can you please just introduce yourself once? Before that, I'll introduce myself. It's Satyam Dikshit, and I have 6+ years of experience. I have worked with AWS Core with Amazon, and total AWS experience is 3+ years. And I've touched almost 200 plus services of AWS within Amazon and even outside the AWS as well. So yes, I'll be your mentor for this course throughout, end to end. बिल्कुल end तक अपन इसको cover करने वाले हैं until we get placed as well. Okay. So can you all just introduce yourself one by one so that everyone get to know each other? Um, guys, my name is Smita Saul, and I am living in Jabalpur.
I complete my graduation in BE in computer science from Shriram Institute of Science and Technology, and I have 2 years experience in manual testing. At the service solution, I'm managing the different type of projects, and I am learning the new things like AWS. Uh, that's all about me. Okay, so currently you are working, right? No, sir. You are not working. Okay, so in that case, you will be an immediate joiner, correct? Yeah, sir. Okay, sounds good. Yeah. Next, Ashish. Am I audible, Ashish? I hope not. Yeah, Babu, you can continue. Hello everyone. Yeah. My name is Bablu. I have a total 10 plus experience, and right now I am working with a Connect Vision Solution as a senior system admin. And I completed my graduation BCA, and also I have done MBA with IT. Okay. Have you ever got to interact with any of the AWS service before throughout your career? No, No. Okay. Anyone in your team or within your immediate team is working on AWS, or anyone whom you know no, apart from me? Okay. yes. Okay. So then how come this idea came in your mind to study AWS? Was it your own investigation or someone suggested you? Look, searching with the internet, and also I want to upgrade my skills. Okay. Okay, sounds good. I think that this is a very good decision that you took moving forward. You'll get to know about this. Uh, okay. Mridul, can you please unmute yourself? Yes, sir. So, hello everyone. I am Radul Sharma. I have total 6+ year experience in technical support field. Currently, I'm working in Connect Business Solution with Bablu Bhaiya. Mm. And I started my career in 2014 with Emphasis Technologies, which is also in Indore, Okay. as a technical trainee engineer. And So, currently, my profile is team lead. okay. So in team lead, like here, what all technology or what all non-tech things you are handling as in responsibility? No, currently we are supporting to application supports and end-to-end client users, Okay, got and it. also providing the system support level on server level. Understood. So mostly Unix is involved, right? No, no, not the unique basis, sir. Only basis of the basic AD level. Okay. Just a For second. Windows विभो, support. एक लैपटॉप देना. We need one laptop. लैपटॉप में नोट बनाने के लिए वो दे दूंगा पेपर भी. नहीं नहीं, it's for him actually, for companion mode. Okay. Okay. Yeah, Nikhat, can you please introduce yourself? Am I audible, Nikhat? No. Am I audible, sir? Yes, yes, you are. Yeah, it's Nikha this side. I'm from Gondia. Okay. I did my computer engineering in 2022. Since there, I did some internship also in web development, Mhm. and now I'm searching for the job in IT sectors. Understood. So sounds good. There's one more batchmate with us who is doing it offline with me. So I would like him to introduce, to all of you. Hi guys, my name is Prashant Rajak. I am belonging from Jabalpur. Recently, I am working in TCS Ion as a senior operation executive and auditor too. Okay. So I see almost everyone except one is a senior person here. And I hope this entire session that we are going to take will be useful
at least whatever services we are gonna cover. Okay, I hope it's fine to have this session in English. Do you want me to mix Hindi or how you want it? Both. What? Both, right? Mix of both. Okay. Okay, so we'll start from the very basics of AWS. Okay, before AWS, even we'll go a step back of AWS. AWS is a cloud technology everyone knows, right? But apart from AWS, और भी बहुत सारे cloud providers हैं. Can you guys name any one of them that you know? Azure Microsoft Azure. Right, Azure. and I think Google have also. Yes, that is Google Cloud Platform, GCP. yes. IBM का भी है, I think. Yes, IBM Cloud is there, Yeah. and we also have Oracle Cloud and many more. So Yeah. ultimately, we need to understand cloud क्या है सबसे पहले. Why everyone and why such big organizations are into cloud. बड़ी companies who are capable, they are providing cloud services now. ऐसा क्यों है? Okay, and apart from that, why people are actually using it continuously and why there are multiple different cloud service providers. Okay, so I'll tell you what's the difference between cloud के पहले क्या था. Anyone, any idea? जब cloud market में नहीं था. There are data centers, Physical. Okay, physical. physical data centers. Okay, apart from that, physical servers also you can say. Yes. Yes. Okay, but the best thing is ये cloud में भी है. Okay, now I'll tell you one very interesting thing. For example, let's suppose आज आपके पास में आपका लैपटॉप है जिसमें 500 GB का स्टोरेज है. ओके, एंड आपको सिर्फ एक ही दिन के लिए 1 TB चाहिए. ओके, सो मे बी द वन ऑप्शन इज लाइक जस्ट फॉर फाइल ट्रांसफर आपको चाहिए. वन ऑप्शन इज कि आप आपके फ्रेंड का लैपटॉप बोरो करो, एक दिन के लिए डेटा स्टोर करो और वापस से ट्रांसफर कर लो. Second option is you buy a hard disk of 1 TB and do your job and then उस hard disk को side में रख दो. Now the first option was easy, जिसमें आपको कुछ costing नहीं लगा. Second thing was something जहाँ पे आपका immediate problem तो solve हो गया, but it costed a lot to you. But what if वो जो 1 TB का हार्ड डिस्क आपने जो रखा हुआ है साइड में, एक दिन यूज करने के बाद उसको रेंट पे चला दिया. So now you are earning from that as well. So this answers both the thing from the user's perspective as well as the cloud service providers. Cloud service providers वो हैं जो वो हार्ड डिस्क को रेंट पे दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने खरीद रखा है. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स इनके पास भी हैं. ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा में चल रहा है. दे ऑल्सो हैव a huge amount of data centers, but they are renting it out. उसको अपन पे पर यूसेज बेसिस पे कितना यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे वी आर टेकिंग इट. ऑन द अदर हैंड, एज ए यूजर, इफ विल सी, आज मुझे एक ही दिन का यूसेज करना है तो मैं एक ही दिन का चार्ज करने वाला हूँ. अब यूसेज कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विस. So there are three different things. One is PaaS, that means platform as a service, software as a service, and then infrastructure as a service. Okay, this is very basic that even अपन normally भी इन चीजों को सुनते हैं, but जो word मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि what used to be there before cloud was on-prem servers या database. On-prem का full form can anyone tell me क्या होता है? On premises. राइट. सो आपने बैंक्स में देखा होगा सर्वर रूम्स रहते थे, अभी भी रहते हैं. जस्ट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी सबका अपना पर्सनल सर्वर रूम होता था, इवन होता भी है अभी. बट फ्यू आर चेंजिंग इट टू क्लाउड नाउ. क्लाउड पे जा रहे हैं.
This process of shifting from on-premises to a cloud infrastructure is called as migration. That means we are migrating from one infrastructure to another. Right now, इसमें migration क्यों कर रहे हैं? Why companies are migrating to cloud? One major reason is costing and usage. अगर मुझे थोड़ा सा ही यूसेज करना है तो मुझे ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा सर्वर्स, ज़्यादा हार्डवेयर, कंप्यूटेशन पावर, रैम परचेज करना पड़ेगा, इवन इफ आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर your memory cards, it comes into 32 GB, 64 GB, but what if you only want 2 GB today? That was the one major reason कि आज तो 2 GB का ही हमको चार्ज पे करना है. Okay, so companies are saving their cost by moving to cloud. That is the first major reason why companies are choosing cloud or why they are migrating to cloud. Second major reason is scaling. Okay, I'll write it down also. Later on, I'll give you a proper notes. First reason is cost effectiveness. Second reason is scalability. For example, आज मेरे पास 32 GB है एंड मुझे वापस से उसको एक्सटेंड करना है. इन क्लाउड यू विल नॉट हैव टू परचेज एनीथिंग एक्सटर्नली कि उसको आगे करना है. इट विल ऑटो स्केल. जैसे ही 32 GB क्रॉस होता है तो शायद 32 GB .1 MB भी आप यूज कर पाओगे, आपकी सर्विसेज स्टॉप नहीं होंगी. बट अगर आपके पास ऑन प्रेमाइसेस है, जब तक आप वो हार्डवेयर नहीं कॉन्फ़िगर करोगे, नहीं लाओगे, आपकी सर्विसेज इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी. एंड अनदर थिंग वाज अवेलेबिलिटी. सर्वर्स कभी भी डाउन हो जाते थे, उनका मेंटेनेंस हाई था, उसका मेंटेनेंस के लिए दे यूज्ड टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ पीपल, एक्सपर्टीज, बहुत केयर रखना पड़ता था. उन रूम्स में एसीज बहुत लगाने पड़ते थे ड्यू टू हीट. सो अगेन नेक्स्ट थिंग वाज मेंटेनेंस. ऑफ कोर्स अनदर जो कॉमन थिंग है दैट इज सिक्योरिटी. एंड वन मेजर थिंग वाज डिजास्टर मैनेजमेंट. व्हाट इफ आपके सर्वर रूम में कहीं से फायर इंसिडेंट हो जाए या फिर नियर बाय कुछ हैवी रेनफॉल हो जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी पूरे एरिया की चली गई. द बेस्ट यू कैन डू इज आपने इन्वर्टर्स लगा लिए, बट अप टू व्हाट लेवल दे विल सस्टेन. किसी टाइम पे तो वो भी डिस्चार्ज हो सकते हैं. दैट मीन्स आपका डायरेक्ट कस्टमर इम्पैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं, भले साल में एक दिन होगा पर होने के चांसेस हैं. ऑल दीज प्रॉब्लम, इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. बट if someone asks you in an interview, this is a kind of interview question, that what are the advantages of using a cloud platform, or why are people shifting from on premises to cloud platform, or what are the reasons people are now migrating from, or not choosing the uh, on-prem databases or servers. So these are the reasons. With example, you will have to explain in the same way जैसे मैंने आपको बताया. Sequentially, it's not a rocket science, it's a actual problem. अब इन सभी प्रॉब्लम को क्लाउड सॉल्व करता है. कैसे? If we talk about cost effectiveness, इनिशियली आप यूसेज बेसिस पे ही पे कर रहे हो. यू डू नॉट हैव टू पे मच. फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस, आपको इनिशियली यू गेट free tier not only on AWS but on other cloud platforms as well. For business startups, they provide a lot of credits, $25,000 or so on. Okay, so अगर कोई नया बिजनेस है and they want to deploy their service, it's like very easy to start with. उनको जाके एक इनिशियल जो सेटअप का कॉस्ट है वो भी बच जाता है. स्केलेबिलिटी इज लाइक, आज फॉर एग्जांपल अमेजोन का दिवाली का जैसे ही बिग बिलियन सेल फ्लिपकार्ट का आता है या दिवाली सेल आता है, विद इन दैट 1 or 2 days बहुत ट्रैफिक आता है, राइट? अगर उस एक दिन के लिए इनको बहुत ज्यादा डेटाबेस सर्वर्स फिजिकली रखने पड़ते तो दैट कुड हैव कॉस्टेड अ लॉट, क्योंकि वो सिर्फ साल के 1 या 2 दिन ही काम आने वाला है. बाकी टाइम तो उसका हाफ भी यूज नहीं होगा इफ यू कंपेयर विद रेगुलर ट्रैफिक. सो व्हाट प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग? स्केलेबिलिटी. जिस दिन ट्रैफिक हाई है
उस दिन वो स्केल हो जाएगा, उस दिन का चार्ज आपको ज्यादा लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट फ्रॉम द नेक्स्ट डे it will again reduce. Okay, so it has the capability of stretching and reducing its capacity basis on the events that is coming in the system. कितना ट्रैफिक आ रहा है उस हिसाब से it adjusts itself. Now when we talk about availability, it is highly available. कैसे highly available है? If I'll just simply show you the AWS console, यहाँ पे मेरे पास multiple options है. North Virginia, that means my cloud is available on US East region, US East region 2, West region 1, West region 2, South, that is Asia Pacific. मुंबई में भी डेटा सेंटर है, ओसाका में भी है. आई मीन अगर एक जगह पे डेटा सेंटर पूरा डाउन भी हो जाता है ड्यू टू एनी एक्टिविटी और मिसहैप, बी इट अ डिजास्टर, बी इट अ टेररिस्ट अटैक, बी इट व्हाटएवर, तो आपका दूसरे सर्वर्स हैंडल कर लेंगे. दैट्स हाउ यू आर 100% अवेलेबल टू योर कस्टमर एंड सो योर सर्विसेज. ठीक है, मेंटेनेंस इज समथिंग अपने को कोई हेडेक ही नहीं है. एनी यूजर और एनी कंपनी एज ए यूजर डज नॉट हैव टू केयर अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द सर्वर्स, बैकअप वगैरह कुछ नहीं लेना. एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर बाय द क्लाउड. इफ यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी, if it is a product of such a big organization, Amazon, IBM, Oracle, or Microsoft, they are also providing you a very good security on top of it. Okay, even to the physical servers and even to the virtual traffic, both type of security. And disaster management, as I covered in availability, it is highly available. Agar kuch incident hota hai to it works or brings up the backup servers and database live as per, so that our services are not impacted. एक recent incident था जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का भी आउटेज आया था 2 हफ्ते पहले ही. माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज आया था, चीजें डाउन हो गई थी. व्हाई? बिकॉज इट वाज इनटू द माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक रीजन. services were impacted. That was the software code में ही issue हो गया. That was not the cloud impact. If the code itself is going down, then कितना भी कहीं पे भी आपका application hosted है, अगर code में ही problem है, then it's gonna be like a kind of disaster itself. जब तक वो code ठीक नहीं होगा, हर जगह एक ही जैसा response जाएगा. I hope so far it is clear with everyone. Any questions so far? No. सबको clear है? These all 4 to Yes. 5 points. Yes. 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 Okay, so now let's cover few interview questions जो इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं कि what are on-prem servers or what are on-prem databases. Another thing of saying this is, जब आप कंपनी को बताओगे कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के पहले क्लाउड यूज नहीं करते थे, या फिर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप पिछले 2 साल से ही क्लाउड की बात क्यों कर रहे हो, तो देन यू कैन से बिकॉज बिफोर दैट my company was using on-prem servers and databases. They migrated to cloud 2 years back only. This is a small justification of whatever, maybe it could be 6 months, 2 months, whatever. We will also be taking care or understanding how migration works. Then अपन ये भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि माइग्रेशन कैसे हुआ था मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एंड हाउ आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट माइग्रेशन. Okay, another thing is what all are the advantages. One more question that will arise, that is a kind of behavioral question, that is why you have chosen AWS. You could have chosen IBM, you could have chosen Oracle, you could have chosen Azure as well, right? So there is no specific ऐसा reason नहीं है कि AWS is the best. Okay, we cannot say कि just because हमने AWS choose किया है मतलब AWS ही best. It's not like that. Everything has its own application. बहुत से finance और banking domain में Azure ज़्यादा prefer किया जाता है because it's a Microsoft service. It is cheap as well. AWS is comparatively costlier, but it has a wide range of services. If you will see, I'll show you my console. If you just click on services, ये console कहाँ से आया है, that also I'll tell you moving forward. But if you'll see analytics, if I click, there are a lot of services. Application integration, a lot of services. Blockchain की service है, business application की service है, cloud financial management की service है, compute container,
customer enablement, database, developer tools, and we are just covering 25, जो कि बहुत कम है if you will see. It has a lot of almost 400 something services, even machine learning में ही इतनी सारी है. Augmented AI जो अपन कवर करने वाले, शायद bedrock का भी we'll cover some part. Then we have SageMaker, ground truth, Lex, and आपको एक सिंगल लाइनर इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा ये किस लिए है. For if you'll talk about Amazon Lex, it is for building voice and text chatbots. इसका एक ही काम है chatbot बनाना. Okay, with each service you can see its application कि ये कहाँ पे use होगा. Like let's suppose Monitron, if we talk, then it is a end-to-end system for equipment monitoring. That means hardware कैसा perform कर रहे हैं, heat up हो रहे हैं, या फिर वो storage full हो रहा है, या CPU high consume हो रहा है. That is being monitored by Amazon Monitron. So if you'll see a huge number of services are there. So one answer of yours, it's not like कि आप ये बोलो कि Azure खराब है. That should not happen. One thing which is generic is I got the opportunity to learn AWS within my organization itself. Very first thing, which is very good answer to say. Within your organization. Why? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते इंटरव्यू में कि मैंने कहीं से ट्रेनिंग लिया या मैंने खुद से पढ़ लिया एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द AWS इंटरव्यू. आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बताओगे कि मैंने उसको यूज किया है इन माय पास्ट एक्सपीरियंस. सो that is quite justifiable that that you will be saying that it was being used in my organization. Second thing is I found it interesting. जब मैंने उस पर काम किया मुझे उसमें इंटरेस्ट आया. इट्स नॉट लाइक कि मुझे कंपनी यूज करती थी तो मुझ पे थोप दिया तो मुझे करना पड़ रहा है. सो विद द फर्स्ट पॉइंट यू विल आल्सो हैव टू से दैट यस आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग व्हेन माय कंपनी वाज यूजिंग इट. देन you have to tell about something that you have done exceptional. Okay, next thing you'll have to say, then I explored more services which my company was not using. मैंने उन सर्विसेज को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया जो मेरी कंपनी यूज नहीं करती थी. And I was able to learn it very quickly. And how you explored? वीडियो नहीं देखा, ट्रेनिंग नहीं लिया, you went through Amazon Web Services documentation. Never say वीडियो पढ़ा या कुछ किया. The best answer is I went through the documentation. वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. So then second point will be you found it interesting. Third point will be you explored the AWS documentation. Now the very next point will be now you found it very fascinating that it has a wide range of services for different use cases. That means almost हर तरह की प्रॉब्लम को AWS की सर्विसेज सॉल्व कर रही है right now. Even of the things जो हम नहीं कर सकते हैं, even satellites if you will see. There is a satellite option, the ground station. आप खुद का ग्राउंड स्टेशन बना सकते हो वर्चुअली. अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइंटिस्ट होते जो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी का सॉरी नॉट एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी आप देख रहे हो एंड स्टडी कर रहे हो, तो आपको उसे स्टडी करने के लिए शायद आपको खुद का सैटेलाइट अपनी छत पे लगाना पड़ता और कितने सारे लगाने पड़ते. ये सैटेलाइट ऑलरेडी कहीं लगा रखे हैं AWS. यू जस्ट आर कॉन्फ़िगरिंग इट फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन यूज इट. आपको जो एनालिसिस करना है, जहां घुमाना है, जिधर टारगेट करना है, यू कैन डू इट, बट इट हैज इट्स ओन हाई कॉस्टिंग. दैट मीन्स एनीथिंग when it comes to hardware, software, or platform, or infrastructure, you do not have to worry about anything. ओके, सब कुछ आपको यहीं एक छोटे से लैपटॉप पे मिल रहा है. अब आपका लैपटॉप तो भले 4 GB रैम का है, बट आप उससे मोर देन 1000 GB रैम भी यूज कर सकते हो यूजिंग जस्ट अ वेब पोर्टल. दैट इज वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड. इट्स नॉट लाइक ओनली अबाउट AWS, बट आप हर जगह इसको यूज कर सकते हो. When you tell about that you got fascinated with the wide range of services, that means यहाँ पे आप बता रहे हो कि आपको उसका एक एडवांटेज मिला. Then you found it very easy to learn, कि आपको वो easily समझ में आया. That's the one very good benefit of AWS is that ये बहुत easy है समझने में comparatively to
Oracle or Azure या फिर IBM, it is not complicated. So it is a genuine reason that you can say कि ये बहुत easy to learn platform था for me to start. Maybe now you can even say moving forward, I would like to explore more technologies or more servers or more cloud service providers. But right now, as of now, I want to gain expertise in AWS. क्योंकि हो सकता है आपका इंटरव्यू AWS पे हो सकता है आपका इंटरव्यू Azure पे हो. ओके, अगर आपके पास में कोई भी क्लाउड की टेक्नोलॉजी होती है, जरूरी नहीं है आपका सिलेक्शन AWS के लिए ही हो सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल आपके लिए Azure के लिए आ जाए. क्यों? क्योंकि यू नो द क्लाउड प्लेटफॉर्म. जरूरी नहीं है आपको Azure नहीं भी यूज किया तो भी आप शायद Azure के लिए हायर हो सकते. क्योंकि जब मैंने AWS का इंटरव्यू दिया था, आई वाज नॉट यूजिंग AWS एट दैट टाइम. उसके पहले मैं Azure और Oracle यूज करता था, बट दे सेलेक्टेड मी फॉर AWS बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. एक ही सर्विस जो एक ही काम करती है, बस दोनों में अलग अलग काम, अलग अलग नाम है, एंड उनका कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा मेथड डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली इट डज द सेम थिंग. ओके, सो इट्स लाइक या तो आप मारुति की गाड़ी चला लो या महिंद्रा की चला लो, अल्टीमेटली इट्स द सेम गियर बॉक्स एंड सेम वे, मे बी ऑटोमेटिक और मैनुअल, बट बहुत सी चीज आर कॉमन. ओके, so that's why you say that you are open to explore any other cloud service providers as well. But why you started with AWS? Always start with your organization. क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि मेरा खुद का चॉइस था, then there will be a lot of questions like कि IBM भी यूज करते हैं, इसमें तो ये चीज सस्ता है, इसमें ये महंगा है, आप इजी पे क्यों जा रहे हो, you don't want to put efforts. That's why for making you or bringing yourself in a safer side, first thing organization, then my choice. एंड लास्ट थिंग कि अगर मैं उसको एक्सप्लोर करने वाला था तो वो उसका एप्लीकेशन में अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकता था, एंड आई वाज एबल टू ग्रो माई सेल्फ इन बोथ वेज, राइट? सो दिस इज वन थिंग. आई होप सो फार इट इज क्लियर. Yes. Got the answer? You will be able to tell na कि why you chose AWS. Yes. Okay, great. So now since we have entered the AWS, we are not covering much about Azure and multiple things. But moving forward, जब अपन कोई सर्विस करेंगे या S3 सर्विस किया तो then I'll also tell you कि S3 AWS में कौन सी सर्विस है, so that in parallel you will also get to know about other cloud providers as well on a high level. Okay. Next thing that we are going to discuss is okay, the few more applications about the AWS. Okay, few more applications as in, you know what we have. AWS was launched in 2006 actually. It was way before when we started working into IT industry. Okay, but the primary reason why it got or why it got the popularity is because of its scalability. Okay, and easy configuration and everything. That's the reason it started. But how it is actually changing the lives is like, it is providing more and more equipments in lesser time, and it is helping others to grow. किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं था. Okay, so another, see why I'm telling about AWS is क्योंकि आपको AWS के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है. You should know more and more information about AWS. That's why I'm just giving you a high level brief, क्योंकि बाकी तो सिर्फ सर्विसेज ही हैं AWS. AWS का इकोसिस्टम बहुत वास्ट है. As I said, the services जो आपको ये आंसर देना है कि wide range of services. In short, it is having a wide range of ecosystem. And another point is extensive documentation. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे वी विल गो, हो सकता है कहीं पे वी विल स्टक व्हाइल प्रैक्टिसिंग, एंड एट दैट पॉइंट ओनली AWS डॉक्यूमेंटेशन इज गोना हेल्प अस, नथिंग एल्स. AWS का डॉक्यूमेंटेशन इज सो क्रिस्प एंड क्लियर कि आप कहीं पे भी नहीं फंस सकते. Whatever problem you face, AWS documentation is gonna help you out in solving your problems. Now few applications जैसे कि IoT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड
हाउ इट इज हेल्पिंग क्लाउड जब से मार्केट में आया है, यू विल सी चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज से 10 साल पहले अपने पास में एक स्मार्टफोन होना बहुत बड़ी बात थी, फैमिली में एक था, या फिर धीरे धीरे अपन लेते थे, धीरे धीरे करके तब अपन ट्रांजिशन कर रहे थे। इन शॉर्ट वी वर माइग्रेटिंग फ्रॉम नॉर्मल लेगेसी फोन्स टू स्मार्टफोन्स, बट विद इन 10 years थिंग्स हैव चेंज्ड कम्प्लीटली। हो सकता है आज से 10 साल बाद हम फोन यूज भी ना करें, क्योंकि एप्पल विजन प्रो आ गया है। इट इज ऑल अबाउट VR। और इतनी जल्दी जल्दी टेस्टिंग कैसे हो पा रही है, इतनी जल्दी जल्दी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाउड, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत हाईली अवेलेबल है। तो ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड बिजनेस जो है बहुत जल्दी जल्दी इनोवेशन कर पा रहे हैं, फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। इट इज वन ऑफ द बिग positive side of using a cloud technology. That's the reason why even companies are using it. Okay, apart from that, I'll just want to talk about the global infrastructure of AWS or any other cloud platform. ये पूरी अर्थ में बिछा हुआ है। इट इज नॉट ओनली इन मुंबई और दिल्ली, इट्स इन थ्रू आउट द एंटायर इक्वेटर लाइन, हर जगह पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेजर डेटा सेंटर्स हैं वो ओशियंस में। ओके, इट इज डीप इनसाइड द वाटर, क्योंकि उनसे इतना हीट प्रोड्यूस होता है दैट अ नॉर्मल सिटी कैन गेट वार्म्ड अप। अगर इतने ज्यादा कंप्यूटेशन यूज होता है, तो जहां पर सर्वर्स और डेटाबेस को रखने की बात आती है, दे आर नॉट एक्चुअली इन द सिटी ऑफ मुंबई, दे आर समवेयर इन द ओशियन नियर मुंबई। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपका डेटा सेंटर वही मुंबई के बीचों बीच रखा है, एल्स इट कुड हैव प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट। अल्टीमेटली बात वही रह जाती कि इंदौर में या मुंबई में कहीं पे कोई डिजास्टर आ गया तो वो पूरा का पूरा चला जाएगा, बिकॉज कुछ सिटीज में बहुत जल्दी जल्दी ऐसे इवेंट्स होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई में ऑलमोस्ट एवरी ईयर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते हैं। बट इफ इट इज अंडर द सी, इफ इट इज ऑलरेडी अंडर द वाटर, the only risk is of breaking of the tectonic plates or about the earthquake, so the probability is quite lesser. but उसका भी बैकअप एंड बैकअप का भी बैकअप एंड बैकअप का भी बैकअप, अपन जितने रखना चाहें, अपना जितना कॉस्टिंग अपन बढ़ाना चाहें, वो अपन कर सकते हैं। वी हैव द ऑप्शन। जब अपन AWS यूज करेंगे, अगर अपन ने उसमें एक फोटो भी रखा है, इट माइट आस्क यू कि आपको इस फोटो का बैकअप रखना है। इट दैट माइट कॉस्ट यू अगेन, क्योंकि आप स्टोरेज अगर 1 MB यूज कर रहे हो, तो शायद इट विल बी 1.1 MB बैकअप में वो कंप्रेस करके रखता है। बट इट विल बी अवेलेबल देन अगेन, अगर वो बैकअप भी चला जाता है तो अगेन बैकअप। सो कंपनीज यूज 2 3 4 बैकअप्स, एंड आपको कितना फ्रीक्वेंट बैकअप लेना है, एवरीथिंग, all these things are available in cloud platform. Okay, apart from that, whenever we are talking about infrastructure as a service, you know, अपन वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर सर्विसेज को यूज कर सकते हैं इंटरनेट पे। ओके, वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, नेटवर्क, इन सबको वी कैन पे एज वी गो। इस बेसिस पे वी आर यूजिंग, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी को कोई ऑफिस खोलना है, तो चेयर्स, computers, doors, lights, these are infrastructures. Similarly, for a software, what all are the dependent things जो operations में काम आ रही है, are servers, database, physical things. Okay, RAM, these all things are infrastructure which we are using as a service. That's why we are calling it as infrastructure as a service. When we talk about platform as a service, let me write it down. Infrastructure means storage, databases, and we also have network, virtual machines, and so on. But when we are talking about platform as a service, we are allowing customer to develop and run and manage their application without dealing with the underlying infrastructure. यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो अपने पास है, मेरे पास में सर्वर है, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म एज इन की, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका बिजनेस है विच इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम डेटाबेस, सर्वर, नेटवर्किंग। अब आपको सिर्फ कोड ही लिखना है,
एंड कोड इज ए काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके चलो, आपको आपके पास में अगर रैम अलग से पड़ी हुई है, आपके पास में हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज इट. इट शुड कंबाइन इटसेल्फ एज ए कंप्यूटर और लैपटॉप, एंड देन उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वो फिजिकल डिवाइस कंबाइंड इज ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे अब आप काम कर रहे हो. उस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई सॉफ्टवेयर होना, जैसे कि नोटपैड, दैट इज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. सो आपके पास में जो ऑलरेडी चीजें भी हैं, आप जरूरी नहीं है सारी सर्विसेज यूज कर. प्लेटफॉर्म है हमारे पास तो सॉफ्टवेयर यूज कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो प्लेटफॉर्म यूज कर लेंगे. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी हैव, व्हाट वेयर वी वांट टू इन्वेस्ट अवर मनी. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर हो गया, ठीक है, आपका कोड इम्यूलेटर्स हो गए, या फिर आईडीई हो गए, या फिर एनी काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इट्स लाइक रेंटिंग आउट एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. जैसे नेटफ्लिक्स है, उसको यूज करने के लिए आप क्या करते हो, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, पर नेटफ्लिक्स आप खरीद नहीं लेते, यू आर जस्ट पेइंग फॉर दैट प्लेटफॉर्म. बट ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनको आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल कैनवा. कैनवा, इफ एनीवन हैज यूज्ड, you are using someone else's software to fulfill your requirement. So here you are paying for the software, but Canva is not like कि आपके यूसेज के आज एक पोस्ट बनाई तो एक ही पोस्ट का चार्ज होगा. उन्होंने आपसे मंथली चार्ज लिया है, भले आप उसको नहीं ओपन कर. दैट्स द रीजन दे आर नॉट क्लाउड प्रोवाइडर्स. If you are using cloud softwares, we will again pay as per our usages. Similarly, for platforms that connects with hardwares slash infra. I hope so far it is clear. सो तो नहीं गए सब लोग? No, no, no. Yes, available. ठीक है. ओके. जस्ट इन केस अगर बीच में कुछ समझ में नहीं आता है या मिस आउट होता है और एनीथिंग ऑन विच यू वांट मोर डिटेल, you can stop me in between and then we can continue. Okay. Today will not take much time. It will be either 1 or 1.5 hours only, because today we are just covering the high level. We are just doing the mind mapping. From tomorrow we'll start the service. Okay. Now let's talk about security and compliances. Okay. AWS का one of the best thing is the security is their topmost priority. एक बार को उनका डाउन टाइम हो जाएगा, उनको चलेगा, बट आपका डेटा लीक नहीं होने देंगे. Okay, that is what they commit, and they commit it as a shared responsibility model. It is not like कि सारी सिक्योरिटी हमारे ही हाथ में और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज ऑल्सो द यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. पता चले यूजर्स ने क्रीडेंशियल शेयर कर दिए किसी से. So, but whatever things are there of at their side of responsibility, they give the top priority to the security. That is another reason why AWS is one of the product that everyone prefers in an IT organization as well. However, सभी का अपना अपना security model है, but as AWS says that this is our first or top priority, that's why it is top priority. नहीं तो security सबका ही priority है, but they are emphasizing more on security. And infrastructure को protect करना, hardware, software, networking, everything that they are providing, even the customer data, they are putting everything, they are keeping everything in an encrypted format. They are even using their own services to encrypt the data. तो डेटा आपका पूरा encrypted रहता है. For where we have one service that we can discuss, that is IAM role or IAM management in the AWS. I'll just show it on the screen. If you will see, where is it? Storage, media transfer, robotics, developer tools, compute. It's not there. Let me search. Okay. If you will see IAM, that means manage access to AWS resources. Okay. Top features, groups, users, roles, policies, access analyzer, जो अपन आगे discuss करेंगे जब when we'll learn this particular service.
बट दिस इज वन ऑफ द सर्विस जिससे आपका AWS का अकाउंट पूरा सिक्योर्ड रहता है विद दिस वन सर्विस इटसेल्फ. Then there are more services for security purposes, that is IAM Identity Center. अगर आपके एक से ज़्यादा AWS अकाउंट है तो उसके लिए उन्होंने अलग सर्विस दी हुई है कि आपका मल्टीपल AWS अकाउंट में, क्योंकि परमिशंस होती है, किसी को इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी डेटा ट्रांसफर करना है, सो देयर विल बी क्रॉस अकाउंट फंक्शनैलिटी जो आप इम्प्लीमेंट करोगे. तो वहां पे आ जाते हैं पॉलिसीज, ग्रुप्स के कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है. दैट मीन्स दैट इज एन अनदर सर्विस फॉर shared or multiple AWS accounts. So now another interview question that arises with AWS aspirants, that what is the difference between IAM and IAM Identity Center? In what situation you will use Identity Center and in what situation you will use only IAM? So you'll have to say very simply in a single liner that if I have more than one accounts to take care of, in that case, I'll be preferring Identity Center because it helps us in managing multiple AWS accounts. And how it does, that we will be discussing when we will be covering these services. But on a high level, this is the major question that this question is asked majorly कि आपको ये services किस situation में use करना है. And again, आपका हर सर्विस को जानने से पहले इट्स उसका एप्लीकेशन और कौन सी सर्विस कब यूज करना है वो जानना बहुत जरूरी है. लेट्स सपोज रिसोर्स एक्सेस मैनेजर इज specifically used for sharing the AWS resources with other accounts. यानी कि आज आपका खुद का एक ही AWS का अकाउंट है पर एक आपके फ्रेंड का है. अब आपको खुद के इंटरनल नहीं, किसी एक्सटर्नल से रिसोर्स शेयर करना है. इन दैट केस सिर्फ वही रिसोर्स एक्सेस हो क्योंकि आप थर्ड पार्टी को दे रहे हो. उस चीज की सिक्योरिटी एक्सेस को मैनेज करने के लिए रिसोर्स एक्सेस मैनेजर यूज होता है. इन दैट केस यू हैव द थर्ड डिफरेंस और द थर्ड सर्विस जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. And nothing else. This mesh is only for monitoring and controlling. Okay, so these three things are most commonly asked. I hope so far it is clear. हाँ yes, ये Yes. IAM का क्या था फिर से करता हूँ. IAM is a service name. ओके जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर जैसे एक फीचर है स्टेटस और स्टोरी और चैट, वैसे ही AWS के अंदर IAM है. IAM का काम है कौन लॉगिन कर रहा है, कौन क्या कर सकता है अकाउंट में, किसको स्टोरेज की परमिशन है, किसको देखने की है, किसको एडिट की है, किसको रीड की है. दिस मैनेजमेंट इज डन यूजिंग दी IAM. ओके सेम थिंग IAM आइडेंटिटी सेंटर मतलब, बट ये मल्टीपल्स को. हाँ जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 जीमेल की आईडी बना रखी है. ओके दैट मीन्स आपके पास में खुद की 2 गूगल ड्राइव है. ओके अब आपको दोनों गूगल ड्राइव को मैनेज करना है. विद इन जीमेल इटसेल्फ आपके खुद के पर्सनल 2 अकाउंट है. अब आपने दोनों पे कुछ कंपनी का डेटा या पर्सनल डेटा रख रखा है तो अब उसकी परमिशन अलग, इसकी परमिशन अलग, आपस में उनका इंटरेक्ट करने की परमिशन अलग, या विद इन टीम. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस ईमेल आईडी ऑफ satyam.dikshit@vectorskillacademy.com, but within Vector Skill Academy there are more peoples, right? Sales team, batch management, HR, multiple people. तो इस AWS कंसोल का एक्सेस सिर्फ मुझे है बिकॉज आई एम द टेक्निकल गाय या फिर आई एम द AWS मेंटर, बट नॉट टू द सेल्स पर्सन. हाउ वी आर मैनेजिंग? वी आर मैनेजिंग विद इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, बट एक ही अकाउंट में वी हैव मल्टीपल यूजर्स. सिमिलरली अगर मेरा कुछ पर्सनल अकाउंट भी है जिसको, या फिर मेरा एक और सिस्टर कंपनी है उसमें भी मुझे सेम AWS अकाउंट यूज करना है, तब मैं दोनों अकाउंट्स के बीच में सर्विसेज या कुछ चीजों को शेयर करूंगा. आई मीन मोर देन वन अकाउंट मैनेजमेंट इज फॉर आइडेंटिटी सेंटर. ओके Okay, so now moving forward, as of now, just to summarize what we have discussed is like, basics of AWS, uska global infrastructure, uska usage, migration, choosing the AWS, security, pricing, cost management, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ रियल लाइफ में यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे यूज अब नहीं कर रहे हैं,
how to get started with AWS is something what we need to discuss now. But the high level idea we have here. Okay. Should we begin with the AWS console? Yes. Okay. Yes. So AWS console is what you will have to search. ठीक है? आप जब भी गूगल पे AWS कंसोल सर्च करोगे यू विल सी AWS मैनेजमेंट कंसोल, AWS रिसोर्स, AWS मैनेजमेंट कंसोल. अल्टीमेटली आपको कंसोल पे जाना है जहां से आप AWS को मैनेज कर सकते. अब AWS का यहाँ पे इफ यू डू नॉट हैव एनी अकाउंट यू विल हैव टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट. दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप सभी को करना है. ठीक है. व्हेन यू विल क्लिक ऑन क्रिएट अ फ्री अकाउंट, I hope screen is visible, right? Yes. Yeah. Yes. You will have to select multiple things. My role, आप क्या हो, academic researcher. Always put it as a student right now initially. Okay, because you will get some added benefits of it. In what area you are interested, you can put anything. Learning and certification. That is the best thing क्योंकि आपको इसमें added advantages मिल जाते हैं. When you will submit it, and when you will try to sign in, since I am already signed in वो option नहीं बता रहा है. Let me open incognito. Okay, जब आप इसमें sign up का option पे जाओगे, okay, I'll tell you one thing in short. उसमें आपको आपका नाम, email ID, पासवर्ड सेट करना है, बट उसके साथ में it will ask you for AWS पेमेंट. ठीक है. आपका क्रेडिट कार्ड आपको लगाना बहुत मतलब जरूरी है वरना वो नहीं बनाता, आपका अकाउंट नहीं क्रिएट करता है. फॉर विच शायद आपका 1 या 2 रुपए का वो अकाउंट का 2 रुपए का डिडक्शन होता है एंड देन आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है एंड यू विल बी एबल टू लॉग इन लाइक दिस. आई गॉट सम क्वेश्चन. या मृदुल, एनी क्वेश्चन? So should we added the debit card also? डेबिट कार्ड भी अलाउड है in some Okay. cases. Okay, I mean visa or master card, visa they prefer, but बहुत से रिजेक्ट भी हो जाते हैं. Okay. ठीक है. Okay. सो इवन आपका क्रेडिट कार्ड भी रिजेक्ट हो जाता है इवन दो इट इज ऑफ वीजा और इवन दो इट इज ऑफ मास्टर कार्ड. सो यू माइट हैव टू ट्राई इट अगेन एंड अगेन. आप लोगों में से जिसका नहीं होता है वो आप मुझे बताना, विल फिगर आउट अ वे और वी विल रेज अ टिकट टू AWS. बट एज सुन एज यू लॉग इन आपको इस टाइप का कंसोल दिखेगा. ठीक है. Okay. अब इसमें अपने को कुछ भी अननेसेसरी यूसेज नहीं करना है. आई विल हेल्प यू कॉन्फ़िगर योर अकाउंट. जब आपका बन जाएगा यू जस्ट गिव द क्रेडेंशियल टू मी सो दैट आई कैन रिस्ट्रिक्ट द यूसेज, ताकि जस्ट इन केस कभी गलती से EC2 इंस्टेंस अप रह गया या कुछ अप रह गया तो आपके डॉलर्स में कॉस्टिंग ना लग जाए. ओके, सो आई विल रेस्ट्रिक्ट द थिंग, आई विल कॉन्फ़िगर एंड मेक श्योर कि आपका चार्जिंग उसमें या वो स्टॉप ही हो जाए ऑटोमेटिकली. ठीक है. एंड आप डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो नॉट ए प्रॉब्लम. ठीक है. वंस यू लॉग इन आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिलेगा एंड इफ यू आर एबल टू डू इट टुडे दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि फिर आपको दिखेंगी बहुत सारी सर्विसेज. बट अपार्ट फ्रॉम दैट if you are not able to log in due to any reasons you will have to search for AWS docs or documentation. जो मैं एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा था ये वो चीज है, documents.aws.amazon.com. और यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. यहाँ पे कंसोल और रीजन वाला आपका console.aws.com है और इसके पीछे जो भी रीजन अपन ने सेलेक्ट किया है. ओके, सो इट्स अ डिफरेंट URL. यहाँ पे यू विल बी एबल टू स्टडी अबाउट ऑल द सर्विसेज इन प्रायर. लेट सपोज कल हम IAM को पढ़ने वाले हैं, सो इट विल बी बेटर इफ यू रीड ए हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट इन योर फ्री टाइम. अगर आपको 15 मिनट भी मिल जाते हैं तो अगर आप इसका एक ग्लैंस लोगे, आई नो इट्स नॉट इन डेप्थ क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा लंबा डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या करना है कैसे करना है, बट इट्स वेरी फर्स्ट गेटिंग स्टार्टेड वाला पेज, सेटिंग अप, ये वाली जो चीजें हैं अगर आप इतना भी कवर कर लोगे या एक बार देख लोगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है. एंड Okay. मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट इज Amazon S3 वाला पेज. ओके, हर सर्विस का
इंट्रोडक्टरी पेज है हर जगह पे, ओके, विच इज नो डिफरेंट एनीवेयर। अपन क्लास में पढ़े या यूट्यूब वीडियो देखे या फिर किसी भी सोर्सेज से पढ़े, द बेस्ट रिसोर्स इज दिस वन, okay. So if you'll read this first page of S3 or IAM, you will get to know about कि ये क्या है, क्या काम करता है, इसके फीचर्स क्या है, स्टोरेज करता है तो स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे होता है, a lot of things are there. Because if you are going to discuss this much of theoretical, it will be costing us a lot of time. We will cover it on very high level, but अगर आपको कुछ doubts रहेंगे तो we will be discussing it on the डिस्कशन पैनल और ड्यूरिंग आवर सेशन, तो अपन प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, Okay. ठीक है. सो इट विल बी बेटर इफ यू विल हैव अ ग्लांस ऑफ IAM बिफोर टुमारोज सेशन, ताकि व्हेन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट थिंग्स आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी रहे और आप थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर पाओ, ठीक है. सो अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, ये तो कंसोल की बात हो गई है. कंसोल के अलावा भी आप इन सभी सर्विसेज को यूज कर सकते हो थ्रू द what do we call which is not a console? Any idea? कंसोल के अलावा जो दूसरा तरीका है वो क्या है AWS सर्विस से इंटरेक्ट करने का? ये तो अपन ने यहाँ से कर लिया. There's one more way to interact with AWS services, that is CLI. What is the full form of CLI? Anyone? Okay. No. It is Command line. yeah, command line interface. That means even just by writing commands, यहाँ लॉगिन भी नहीं करना है, अपन टर्मिनल्स में ही यूजर नेम पासवर्ड कमांड S3 बकेट लिस्ट बकेट और क्या क्या बकेट है सब कुछ कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि अपन करेंगे भी सही, okay. So each and every service using the, mostly we will be using the management console, but कमांड लाइन के कमांड्स के आप कैसे उसको लिस्ट कर सकते हो, कैसे देख सकते हो, अपडेट कर सकते हो, बेसिक इट विल बी सेम इन एवरी सर्विस, बट कमांड्स चेंज हो जाएंगे, दैट यू विल फाइंड इन डॉक्यूमेंटेशन, बट एक बार अपन कर करके उसको देख लें, ठीक है. सो फार इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. एनी क्वेश्चन सो फार? नो? No. Right now, no. Okay. Sorry. So what we will be doing throughout our 1 month of training or 60 hours of learning, what we will be discussing, as now you can see we have uh, a curriculum with different services, पर यहाँ पे उससे भी बहुत ज्यादा है, राइट. इसका मतलब ये नहीं होगा कि अपन सिर्फ वही सर्विस पढ़ने वाले हैं जो करिकुलम में. आई विल आल्सो बी गाइडिंग यू अबाउट द रिलेटेड सर्विस इवन आउटसाइड द AWS. जरूरी नहीं है AWS, उसके अलावा भी ओरेकल का भी कुछ समझना होगा. हाँ मृदुल, you have typed it in the chat. Oh, sorry, sir. No issues. Misprint हो गया, sorry. No worries. See, so जितनी भी सर्विसेज हम लोग करने वाले हैं वो सब वेल पिक्ड है ना. जितना भी जॉब रिक्वायरमेंट जो मार्केट में है उन चीज़ों को एनालाइज करके ही मैंने इन चीज़ों को सेलेक्ट किया है. इनके ऊपर क्वेश्चनिंग जो होगी, इनको जस्टिफिकेशन जो होगा, आपको सभी 25 सर्विस एक्सेल नहीं करनी है. I'll tell you about my resume. Even after knowing 200 services, I just write 5 to 10 service in my resume. ठीक है, मैं फिर भी 5 से 10 ही लिखता हूँ, और अगर कोई दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया तो मैं उनको शफल करके एक हटा के दूसरा डालता हूँ, बट मैं उसमें ऐसा फ्लड नहीं करता. वी विल आइडेंटिफाई कि किसकी कौन सी सर्विसेज बेस्ट है या किसको किस सर्विस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. थर्ड थिंग, किसके यूज केस या पास्ट एक्सपीरियंस या करंट एक्सपीरियंस में वो फिट हो रही है. ऑन दैट बेसिस वी विल पिक द टॉप 5 to 10 सर्विसेज, जिसपे एंड में हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे आफ्टर कवरिंग एवरीथिंग. Okay, we will not complicate our lives by putting more services, but as we will start learning it, अपने को उनके एप्लीकेशंस और चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि भले 5 लिखा है इंटरव्यू में वो 50 पूछते ही हैं, एनीवेज दे विल आस्क.
but we'll not put it in the resume. Okay, the major services we will write. And the related technology, for example अपन AWS serverless lambda पढ़ने वाले हैं. Okay, it is one of the service जिस जो कि कोडिंग के लिए यूज होता है, सर्वरलेस प्रोग्रामिंग. तो कहीं ना कहीं हमको पाइथन का भी एक छोटा सा पीस ऑफ कोड समझना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर आपने लैम्डा यूज किया है तो ऑब्वियसली उसमें प्रोग्रामिंग की होगी. विदाउट एनी रीजन तो आप या विदाउट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते. तो वो क्या प्रोग्रामिंग की है, एक दो यूज केस हम लोग समझेंगे, 5-6 आप खुद ही एक्सप्लोर कर लोगे चैट जीपीटी के. सो आई विल मेक दैट काइंड ऑफ माइंड मैपिंग कि आपको उसमें कैसे उसका एप्लीकेशन दिखाना है मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो since it was a lot of theoretical, I just don't want to extend it today, because tomorrow we will be starting fresh with the IAM roles and आइडेंटिटी मैनेजमेंट, यूजर ग्रुप मैनेजमेंट के कैसे अपन इसको एक पूरे के पूरे AWS अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं. बिफोर दैट आई वो जस्ट वांट यू टू क्रिएट योर AWS profiles. That's it. And if in case you find any problem throughout the day, you guys can ping me, or you guys can ping me your credentials as well. Okay, don't put the password which you use for your current existing social media or something. Use something else right now, because that will be something that will be shared with me as well. Okay, so one mistake जो security measures में होता है, भले हम ऐसे नए प्लेटफॉर्म पे आईडी बना रहे हैं जो किसी को शेयर करना है, पर हम पासवर्ड वही यूज करते हैं जो कहीं और करता है, और हमको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या ही कर लेगा, बट he now knows your other social media credential as well. So it's the kind of social engineering that we need to take care about. Okay, Okay. कुछ भी एक जेनेरिक सा पासवर्ड रखना, डोंट यूज समथिंग एल्स. या निखत, any question? Sir, all the services, 25 services are come in 8 tier, or we have to pay for? It will be mostly in the 8 year, but AI and machine learning services will come as in charging basis, where I will be taking care of it, I will be using them, and I will be telling you about the services, that how to configure it and how to use it. तो जहाँ पे भी चार्जेबल रहेंगे उन सभी को I will be using, or I will be showcasing कि ये कैसे होता है. And even if you will want to do it, I will be sharing you my credentials to use. Okay, अगर आपको practice या practical करना होगा, you guys can use my AWS account for that. Okay, because there are few ways to get free credits as well. I am working on it. I'm also thinking on how I can help you guys as well, because initially AWS provides around $25,000 credits, but for that you might have to showcase yourself as a startup or a business startup. So that's a different story. I'm just trying to do that without business details, because vector se to I can take एक बार. If that tricks works, then I will tell you also कि कैसे अपन घुमा के credits ले सकते हैं. Okay, I'm just trying work around here. Okay. Okay, sir. Okay. I hope this is something where we can wind up the session for today. If you guys have any question regarding the curriculum or how we are going to cover it, I hope everyone is fine for 1.5 or 2 hours of session daily. It's not gonna be daily, but जिस दिन ऐसा लग रहा है कि अपनी सर्विस 2 घंटे वाली है, उस दिन 2 घंटे करेंगे. जिस दिन 1 घंटे का है, 1 घंटे. I hope Yes, no किसी issue. को issue नहीं है. And if in case you have, you guys can let me know in prior personally as well. Okay. Okay. Okay, I think we can wind up for today. From tomorrow we'll be using the first AWS service, that is IAM. But आप लोग थोड़ा registration just try to do it and make sure कि आपका console ready हो at least after tomorrow's session, ताकि कल जो करने वाले हैं उसका practice आप कर पाओ on the go. Okay, Okay. fine. Cool. Okay, I'll share the notes. I mean, I will prepare a kind of organized notes, and I'll provide you all the access of it. Moving forward, we will also revamp it and make it more, uh, you know, readable and more informative. Right now, I have just written it in short, and I'm not doing that PPT thing, because PPT is just like कुछ pointers and you are getting it.
I'm gonna provide you the extensive things only, and I'll be writing it on the fly क्योंकि बहुत से चीजें on the fly आती हैं, and with PPT we cannot do that. Okay, so that looks good, but I think this is the best approach. We'll go with the Google documentation. Okay, and then I'll fill in all the details moving forward. Okay, I think that's it from my side. And you guys can also drop if you have any feedback. You can let me know for tomorrow. अगर कुछ changes करने हो तो. Sure, sir. Okay, Okay, sure. fine. Thank you. Have a good night. Bye. Okay. Okay. Good Bye. night. Good Bye. night.